So in Tolmen theory of learning, if you know that when we start the learning chapter, so we start with the behavioristic school of learning. So according to behavioristic school of learning, learning is basically related to the pairing of stimulus and response. Or then after this, learning is basically related to reward and punishment. You will get the reward, you will get the punishment, and then accordingly, your learning will occur. But as we move forward in the chapter of learning in the school of behaviorism, we saw about the learning which is given by Albert Bandura, which is social learning. So from Albert Bandura, the perspective related to cognition also come into place. Okay, so Albert Bandura first mentioned about that there is also a role of cognition. Therefore, his social learning theory later on become social cognitive learning theory. Okay, so we know that there is some cognition role playing in the case of learning. Same in the case of insight learning, we have seen, which was given by Gestaltic approach. So in insight learning also, we are doing like understanding the concept. Insight is there, introspection is there. So all these things also related to the concept of cognition. All these things also we are our thinking, our cognition playing important role. Okay. In the same line, the next one is Tolman. Okay, so Tolman also basically from Gestalt school. Tolman also from the Gestalt school, and Tolman also mentioned that there is a role of cognition. Okay, when we try to learn something. Okay, so for this, Tolman conducted one experiment. Okay, and again he conducted experiment on rats. चूहों पर इन्होंने experiment किया था. अब Tolman was actually saying that behaviorist or Skinner approach should not be there. Role of cognition is there. So for this, what Tolman has done, Tolman has conducted an experiment on rats, and he conducted experiment on a kind of maze. So let's suppose it's a maze. भूल भुलैया टाइप होती है ना, तो मेज है ये. मेज 1, मेज 2. So obviously the maze is of like complicated form, but just to simplify the things, I have drawn these two lines. Consider this as a maze. Okay, so now what was happening in this maze 1, the rat was running. In the maze 2 also, the rats were running. ठीक है, मेज 1 में भी चूहों को दौड़ाया गया, मेज 2 में भी चूहों को दौड़ाया गया. Now what is the difference? When rats in the maze 1, they completed the maze, then at the end of the maze, they were giving food as a reinforcement. Okay, so let's say for example, on day 1, they completed the maze, so they were given the food. Okay, so food obviously acting as a reinforcement for them. So day 1, they complete the maze, they get the food. Okay, so again day 2, they completed the maze, they get the food. Again, day 3, completed the maze, they get the food. Okay, so in this way, they were reinforced by the food every time they were reaching to the end of the maze. Okay, on the other hand, in the second one, जो दूसरा maze था, इसमें क्या हुआ था? Rats were running in the maze, but they were not getting any kind of reinforcement. So they completed the maze on day 1, but no food is given to them. They completed the maze on day 2, no food is given to them. Okay, day 1 पे मेज खत्म किया, कोई फूड वूड नहीं दिया. डे 2 पर किया, वापस से पहुंचा दिया, फिर भी कोई फूड नहीं दिया. ठीक है, तो इन द सेम वे द सेम प्रोसेस वाज रिपीटेड टिल डे 9. No food was given. Till day 9, no food was given. But after 9 day, condition was changed. ठीक है, 9 दिन के बाद कंडीशन चेंज कर दी गई, तो 9 दिन तक इनको कोई भी खाना ना मिला. ठीक है, टिल डे 9 they were not given any kind of reinforcement, and they were just bring back to the starting point, and they were just completing the maze. But till day 9 they were getting food as an reinforcement, and then they are completing the maze. Okay, so this was the case. Now what happened, इसमें हमने क्या देखा? After day 9, from day 10 to day 17, from day 10 to day 17, then they start getting food. फिर इनको food मिलना शुरू हो गया.
Okay, from day to 70 they start getting food, and from day to day 70 इनके साथ तो सेम ही हो जाता है, इनको तो मिल ही जाता खाना, दे वर रेगुलरली गेटिंग द फूड. Okay, but in the second experiment, these rats then start getting food from day 10 to continuously day 70. And it was observed that the performance of these rats increases. Okay, they were able to complete the maze more efficiently. They were able to complete the maze in a good speed if we compare with the rats of the experiment number one. ठीक है, तो इनके साथ तो क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस इज देयर. So if we take the example of behaviorist, if we go according to the behavioristic school, if we go according to the Skinner, their performance will only increase. Their performance should increase because they are getting reinforcement after every day. Okay, their performance should not be increased because they are not getting reinforcement. Okay, in the initial days. Okay, so this was a reverse approach. ये एक against Skinner approach था कि day 1 से day 10 पर उनको खाना नहीं दिया हमने, लेकिन day 10 पर हमने इनको खाना देना शुरू किया. We start giving food to them from day 10. Okay, and then we observe that from day 10 when we start giving them food, their performance increases marginally. उनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा हो गया कि इन्होंने इनको भी बीट कर दिया. जो एक्सपेरिमेंटल नंबर 1 में जो रेट्स थे, इनको भी बीट कर दिया. दीज रेट्स बीट द रेट प्रेजेंट इन दिस एक्सपेरिमेंट. ओके, नाउ व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर? ऐसा क्यों हो जाता? व्हाई इट इज हैपनिंग? Okay, so Tolmen has then given the concept which is known as the concept of latent learning. इन्होंने एक कंसेप्ट दिया, उसको बोलते हैं लेटेंट लर्निंग. Okay, so what Tolman has said, from day 1 to day 10 they are not getting any kind of reinforcement. Okay, but when they were crossing the maze, okay, or when they were running through the maze, these rats, when they were running through the maze, they develop a latent learning. Okay, they begin to develop cognitive map of the complete maze. उन्होंने अपने माइंड के अंदर ही उस मेज का एक कॉग्निटिव मैप बना लिया था, एक नक्शा बना लिया था कि यहाँ पर ये जगह होगी, यहाँ पर ये जगह होगी, यहाँ पर ये जगह होगी. ओके, ऑल्दो दे वर नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ एनफोर्समेंट, बट देयर माइंड इज वर्किंग. उनका माइंड वर्क कर रहा था, उनका कॉग्निशन वर्क कर रहा था. तो जो माइंड वर्क कर रहा था, वो कॉग्निशन वर्क कर रहा था, उनसे उससे उनको एक लर्निंग आ गई. हालांकि रिइंफोर्समेंट नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने अपने माइंड ही माइंड में एक क्या कर दिया, एक इन सब इस पूरी मेज का एक कॉग्निटिव मैप बना दिया. एक कॉग्निटिव मैप बना दिया. ठीक है, अब उनके माइंड में एक कॉग्निटिव मैप बन गया. अब जैसे ही उनको रीइंफोर्समेंट मिला, सो दे वर हेवीली मोटिवेटेड, क्योंकि उनके अंदर कॉग्निटिव मैप ऑलरेडी बन चुका है. अब उस कॉग्निटिव मैप को उनको सिर्फ इस्तेमाल करना था. ठीक है, ओके, इन्होंने भी मैप बनाया. ठीक है, लेकिन इनकी कैपेसिटी ज्यादा थी, क्योंकि शुरुआत में देखो उनको ना एकदम से इंस्टेंट मोटिवेशन मिला काम करने का. ठीक है ना, ये इनको भी शुरू से मिल रहा था, लेकिन इनके लिए मोटिवेशन क्या था? एक्सटर्नल फैक्टर्स. फूड वाज द मोटिवेशन, फूड वाज द रीइंफोर्सर. बट इनका क्या था? इनको डे 1 से लेकर डे 10 तक तो फूड मिला ही नहीं, तो इनके लिए रीइंफोर्समेंट क्या था? इंटरनल फैक्टर्स. एंड व्हाट आर इंटरनल फैक्टर्स? इंटरनल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट. ठीक है, इंटरनल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू अवर कंप्लीशन ऑफ गोल्स. इंटरनल फैक्टर्स आर रिलेटेड टू अवर थिंकिंग प्रोसेस, माइंड प्रोसेस. तो इस वजह से इन्होंने इस मैप को जल्दी कंप्लीट कर लिया. ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ लेटेंट लर्निंग. ये होती है लेटेंट लर्निंग कि हम क्या होता है ना, हम ऐसा नहीं कि हमेशा तभी कोई लर्निंग करेंगे जब हमें रिइंफोर्समेंट मिलेगा. हम सीखते रहते हैं चीजों को. वी कीप ऑन लर्निंग द थिंग्स. ओके, एंड वी डिड नॉट परफॉर्म देम बिकॉज द टाइम इज नॉट करेक्ट, बट दैट डजंट मीन वी डोंट नो हाउ टू परफॉर्म दैट टास्क. ओके, वी विल बी एबल टू परफॉर्म दैट टास्क व्हेनेवर वी गेट रिइंफोर्समेंट फॉर दिस. हम उसको कर लेंगे और बहुत अच्छे से कर लेंगे. तो हम अपने माइंड में भी क्या होता है, चीजों को सीखते रहते हैं. ओके, वी कीप ऑन learning a lot of concept. Okay, so this is what latent learning and this is what a cognitive map. Okay, so for example, आप एक एग्जांपल देखिए. जैसे आप अपने घर से बाहर जाते हैं, आप अपने घर से बाहर जाते हैं, आप डेली बाहर जा रहे हैं घर से. ठीक है, you are going outside from your home or you're going outside from your new PG on daily basis. So what will happen after some days? You will develop a cognitive map of all the surroundings near your PG or near your house. अपने घर के आसपास या पीजी के आसपास की जितनी भी चीजें होंगी ना, आपका उन सब का एक कॉग्निटिव मैप तैयार हो जाएगा आपके अंदर. अब आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैं अगर घर से बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर एक होटल है, मैं घर से बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर एक मेडिकल की शॉप है, मैं घर से बाहर जाता हूँ तो यहाँ पर एक खाने की शॉप है. तो वो कॉग्निटिव मैप आपके अंदर तैयार हो गया, क्योंकि आप डेली वो काम कर रहे. ओके, सो दिस इज कॉग्निटिव मैप, है ना. ये हमारा कॉग्निटिव मैप होता है.
इसी तरीके से अगर आपने कभी वीडियो गेम प्ले किए हो, ओके, इफ यू एवर प्लेड वीडियो गेम, सो इन द वीडियो गेम आल्सो, लाइक व्हेन वी कीप ऑन प्लेइंग देम, सो वी डेवलप अ मैप कि इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है। तो आप एक हाईएस्ट पॉइंट तक तो पहुंच ही जाते हो, अब आपको उसको क्रॉस करना है, क्योंकि वहां तक पहुंचने का, जैसे मान लो द हाईएस्ट स्कोर इन द वीडियो गेम इज 100, okay, now you have already developed a cognitive map that how to reach up to point 80। ठीक है, वो आपने डेली डेली प्रैक्टिस कर करके आपने उसको लेकर एक कॉग्निटिव मैप तैयार कर लिया है। अब आपको उसको बस यूज करना है, ओके, यू जस्ट नीड टू यूज दिस। आपने यूज किया कॉग्निटिव मैप को, और वो आप 100 तक अपने आप पहुंच गए। ठीक है ना? सो दिस इज कॉग्निटिव मैप, दिस इज लेटेंट लर्निंग। ओके, सो दिस वाज द कंसेप्ट व्हिच वाज गिवन बाय टोलमैन, एंड टोलमैन हैज सेड दैट whenever there is a stimulus, on the right hand side there is a response. So according to behavioristic school, there would be one stimulus, there would be one response, there would be nothing else except these two concepts। एक S होगा, एक R होगा, तो इनके बीच में और कुछ भी नहीं होता। तो जो हमारे बिहेवियरिस्ट होते थे वो क्या बोलते थे कि इनके बीच में कुछ भी नहीं है, देयर इज अ ब्लैक बॉक्स। ठीक है, एक ब्लैक बॉक्स है और कुछ भी नहीं है इनके अंदर। बट ऑन द अदर हैंड, इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ टोलमैन, दैट टोलमैन इज सेइंग दैट देयर इज वन स्टिमुलस, there is one response, and in the medium or in the middle, this is a there is a mediating process। एक मीडिएटिंग प्रोसेस है जो इन दोनों को कंट्रोल कर रही है। देयर इज अ मीडिएटिंग प्रोसेस इन बिटवीन, एंड दैट मीडिएटिंग प्रोसेस इज अवर कॉग्निशन। ये जो मीडिएटिंग प्रोसेस है ये क्या है? हमारा कॉग्निशन। दिस इज अवर कॉग्निशन। ओके, सो दिस इज व्हाट द अप्रोच ऑफ टोलमैन। ये हमारा टोलमैन का अप्रोच होता है। ठीक है, कि इन दोनों के बीच में एक मीडिएटिंग प्रोसेस हो जाती है और वो हमारा कॉग्निशन होता है। ओके, एंड दिस इज अ काइंड ऑफ मेज। अगर आपको मेज का देखना हो ना, तो ऐसी मेज थी वो। ओके, ये देखो, ये टोलमैन की मेज है। सो मेज, आई थिंक समझ लो, भूल भुलैया होती है ना, वो मेज है ना। ठीक है, सो दिस इज टोलमैन मेज, सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर पहले चूहों को दौड़ाया, देखो ये यहाँ से गए, यहाँ से गए, यहाँ से गए। तो डे 1 से लेकर डे 10 तक उनको कोई इन्फोर्समेंट नहीं मिला था, लेकिन उनको रास्ता समझ में आ गया था कि इस तरीके का कुछ रास्ता होता है। ओके, एक कॉग्निटिव उनके माइंड में एक मैप छप गया था, और जैसे ही फिर उनको इन्फोर्समेंट मिला और उन्होंने उस काम को पूरा कर दिया।